lawyers are also using the AI. ये सोचना ही नहीं है कि AI की वजह से जॉब चली जाएगी. Everyone will need a lawyer to get their work done. We are in a digital era and digital era में क्या हो रहा है कि information इतना ज्यादा available है ना कि लोग सब अरे ये भी पढ़ता हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी देख लेता हूँ यूट्यूब पे, ये भी नहीं. यू हैव टू जस्ट फोकस, एक चीज पे फोकस करो, उसको 2 बार कर लो, 3 बार कर लो. Good evening, everyone. So today's session will talk about the before CET, then CET preparation journey, then GLC का struggle क्या था, journey क्या थी, and then GLC के बाद industry में क्या होता है, professional experience and future goal and etc etc. And in between you can post your doubt and question. If you have anything you can ask from Hanumant. Hanumant, he was with Manoeuvre I think 2020. Yeah, 2020. When COVID just hit, not in the month of March, so Correct. he joined us. He's from Dadar Center, in fact. So फिर दादर सेंटर में बंद करना पड़ा, कोविड आ गया, सब बंद, तो फिर ऑनलाइन. अभी जैसे सब चीजें हम वापस से इट इज बैक टू ऑनलाइन, सो वी आर ब्रिंगिंग एवरीथिंग ऑनलाइन. तो अभी अब सेम वे लास्ट टाइम कोविड के टाइम पे भी हुआ था. सो देन ऑनलाइन प्रिपरेशन हो गई एंड थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था प्रिपरेशन लेक्चर्स वगैरह को लेकर के, बट हाँ फाइनली चीजें सॉर्ट आउट हो गई. सो ही इज फ्रॉम अ दादर सेंटर एंड स्कोर क्या था सीटी में अप्रोक्सीमेट? I cannot recall, but like rank was around like 300 or something. 300 के अंदर की रैंक थी. Yeah, ओके. yeah. सो हनुमंत, पहले तो सीटी के पहले क्या क्या एक्सपीरियंस, मतलब बिफोर एमएच लॉ सीटी लिखना पड़ेगा टू परसीव लॉ, और लॉ करना है, ये एक बेसिक आइडिया. मतलब ये हर एक एस्पिरेंट के माइंड में ये होता है ना कि यार मुझे लॉ क्यों करना है, और एक स्टीरियोटाइप माइंडसेट होता है ना, लॉ करेंगे तो मतलब लॉयर बनेंगे, कोर्ट रूम का वाला प्रैक्टिस होगा, है ना, ऑर्डर Mm-hmm. ऑर्डर होगा, ये एक जनरल माइंडसेट है. तो थोड़ा सा ये That's correct. इसको डिस्कस करते हैं. हाँ, सो लॉ करना ये आइडिया कैसे आया था? So like basically like from my young age, like I was very like inclined towards law, but हम्म. like I kept this like this thing within me because I thought कि if I will say to my parents that like I am interested in law, so हम्म. probably after my 12th they will say me ki join the law college. But I kept like like this thing hidden. The reason was because I used to play cricket, so I never want to leave cricket and like go for like whole time study ka thing. But like after I did my BCom in the final year, I got injury, and then because of that, I have to stop playing. So at that time, like I started doing research about the law. So ओके. while doing research, I came across that MH LAWCET is the exam which one has to give, and like as everyone does the Google, which is the best law college. So like when I googled, it was GLC. So at that moment only I thought कि अब तो यहीं से करना है. Then started like with syllabus and everything, finding coaching like institute and everything. So like that it started. देन यू हंट अबाउट, ओके, मेन्यूअर यूट्यूब पे देखा था ऐसे ही कैसे? I guess it was YouTube or some. Yeah, it was YouTube. I guess in 2019 batch हाँ, there इतना was a यूट्यूब student नहीं था. named Alisha. There was a name student named Alisha. I saw हाँ the हाँ video हाँ of हाँ Alisha. हाँ, अलीशा Yeah, डुशिजा. correct. So she got into GLC. So I saw her video and then I joined. हाँ Yeah. राइट, अलीशा So का I वीडियो entered. था. I'm glad that I entered through the door of the other branch. Because the vibe I got, yeah, this here I will get the like complete thing. All I need to do is be in discipline and consistent with my syllabus, with my studies. नाइस. सो अलीशा से मिले कि नहीं कॉलेज के अंदर? Yeah, शी we met like yeah, we मिले met. ना, वन ईयर सीनियर, शी आई मीन शी मस्ट बी वन Yeah, और 2 ईयर मे बी. one अभी year, तो 1 year. 1 ईयर, अभी तो पास आउट हो गए, वो भी कहीं अच्छी जगह पे कुछ हो गई, अभी तो कांटेक्ट में नहीं है. I guess she is preparing for judiciary. I may be अच्छा, wrong. जुडिशरी. ओके. Yeah. ओके, सही है यार. ओके, बेसिक बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड, 10-12 ग्रेड्स क्या था, और हाँ उसके बाद हम लॉ पे तो आएंगे, तो एकेडमिक बैकग्राउंड क्या Yeah. है? Yeah, so like as I like mentioned that from initial days only, it was in my mind that I want to do law, but I kept हम्म. think this thing like hidden from my parents. So I हम्म. choose a very easy course so that I can give add like time to cricket. So I हम्म. choose my like commerce, then BCom so that I can play cricket. So that was my background. But yeah, ओके. deep down it was always there कि like if ever like in life I want to achieve anything in हम्म. like professional realm, then it will हम्म. be a law.
and then हम्म. nothing else. So, okay, so when you join Maneuver, फिर आपके lectures हुए, then practicing and etc. CET preparation journey, if you like to explain कि what was the Yeah, obstacle you came across, क्या क्या challenges थे, competition उस समय I think अभी से तो कम था, अभी competition around 1 lakh touch कर रहा है 3 years का. अभी उस it's last huge. time जब when you had appeared I think वो 30-40 thousand था approx. Yeah, correct. Around 30-40,000. Hmm. It Yeah. has multiplied 10 to 3. Very So, good. yeah. So basically, when I started for MH Law CET preparation, initial thing which I did was I wrote the syllabus. Hmm. Like I will say to everyone that you should know what is in the syllabus, because many a time we just get material and then like we start reading like other things which are not relevant only. You should know your syllabus, prepare a schedule in such a way that you hit all the like four subjects like legal, logical Hmm. reasoning, Hmm. law, and GK. So every day you have to like go through all these four subjects. So my like time like schedule was such that I used to hit all these subjects in a day, Hmm. and Which then section eventually was a like bit challenging for you? challenging was like lockdown. So during the lockdown, like everything went digital. Like Hmm. so from reading newspaper hard copy to like digital. So it was not easy, but yeah, that was a blessing in like this guys, because eventually the MH Law City exams is basically it's online. Hmm. So that helped me to read from the screen, because many a time reading through a newspaper and reading virtually makes a Hmm. like big difference. So because Hmm. of that lockdown we like shift to like online modes, so I got used to the reading on the screen, so that was very helpful. And the another challenge which was like 1 month prior to the exam I tested positive, then I was admitted like in a hospital, and then I lost like all my hopes that I will get or not. Oh, So when I ऐसा came हुआ back, था? yeah, so like when I came back, I started with the mock test. I just Okay. wanted to see where I stand now. Means before COVID, like testing positive, and now where I stand. So I started giving mock test, and slowly my score like went increasing from 5, 10, and 20. And then I Hmm. started with EK notes and legal notes, and then slowly I gained confidence because of the mock scores. Okay. The scores which I got in the mock, that's where I gained my confidence that yes, I can appear and I can still manage to get into GLC. Okay. Nice. So मेनूर के जो resources थे, tests थे, अभी तो काफी revamped हो गया है. Study material. How much it help you to crack your exam and in your preparation? Just now I said ki after like COVID, when I came back home, I started with the mock test, because I अच्छा. knew if I give the mock test, because I knew at that time only ki the mock tests are designed in such a way that it will cover your whole syllabus, and like it is nothing but your exam. हाँ. So I started with mock so that from there I will get the confidence. And I Hmm. gave mock, and then I started with GK notes and legal notes. So all those were like very helpful to me. And mock test is like something one should give. And I will suggest to everyone like watching here. So the day you will get your like hall ticket, like 10 days or like 15 days back, whatever is your timing for exam. For example, like it's in the morning slot or afternoon slot or the evening slot, 10 days prior to the exam start giving exam like mock test, or like at that time only, so your mind will sink in such a way that on the day of exam you will act like very smoothly. That will help Hmm. you. Okay. So after result, when you saw, I mean, when you type your application ID, okay, Hmm. registration ID, and saw your result. So what was the expression? So like I will just say that it matched with my hard work. That's it. So I was so happy. Like actually at that time I was teaching in a like college Mm-hmm. to like 11th and 12th. And at that time, I saw my score and I was so happy. And I said, ki finally, like after doing of like lot of hustle, I am here. Like I will get into GLC. And then I like immediately called my mom and told her ki that ho jayega. Hmm. Okay. So first day when you were entering into the GLC Mumbai, what was the feeling? Legacy, Huh? legacy. Legacy. Eyes were like here and there. Yeah. So the legacy with GLC carries, and like the moment I entered into the college, I realized ki yes, this is not the end. This is the beginning. Now this is Hmm. the beginning. From here,
one has to want to get into this field, because being a first generation lawyer, for me it was not easy, and even it is like never easy. So getting into ELC, the huge library, the moot courts, the arbitration, like all those things, like experience was very novel for me. Mhm. That helped Mhm. me a lot. And then the placement committee, with the help of like placement committee, I got my first internship, and Wow. that was of like In the first year imminent itself. litigation. Second year. In the Second second year. year, I got. In the Okay. second year, I started applying. So basically, one has the option. One can apply from the first year itself. But I applied in the like second year. So Okay. I got. So I got a criminal internship. So in that, like I did for a 6 month, and then I realized the tasks, the challenge, and the demand which this field required. And after 6 months, I was like groomed in such a way. Yeah, I can do it. It was like that. So GLC has helped from 0 to 100. I will say in all the circumstances, it has helped me from being moot court, Mhm. internships, placements, and everything. So, in 3 years LLB, I mean, from right from the second year or the first year, you can start with the internship, right? Yeah, How yes. about 5 years? 5 years, it is the same or like a second year onwards or It's third year same. onwards? It's same. It's same. One can apply from the first year itself. ओके, थोड़ा सा और There are डिटेल like में जाते हैं कॉलेज के अंदर व्हाट आर द कमिटीज एंड हाउ इज द कल्चर इफ यू कैन एक्सप्लेन. cultural, like I will say everyone is like very supportive, from to our like officer to हम्म. students to committee members, like everyone is like very approachable. So you हम्म. will never feel ki like I'm not getting anything. So if one has to know anything about law, you can reach out to professor easily. हम्म. So there is like, so it's like a open door. हम्म. It's like a open door for the student to reach to a professor if there is anything. ओके. ओके, Yeah. क्राउड, हाउ वाज द क्राउड, एवरीवन फ्रॉम मुंबई या नागपुर, नासिक, महाराष्ट्र, अक्रॉस इंडिया आल्सो? It was pan India, I will say. It was pan India. Like in my batch, there were students from like the LE, MP, Uttar Pradesh. So it was pan India. Okay, so in your batch, like a crowd was it like when you get good score in CET, then you get into the GLC, right? So Hmm. वो फीलिंग थी कि यार हाँ ये मतलब क्राउड है, क्रीम क्राउड है, वो फीलिंग Yeah, आ रही yeah, थी yeah, व्हेन yeah. यू वर अराउंड दीस That you पीपल? will feel. That that thing you will feel there. कि yeah, कि ये जो आए हैं अंदर, who are these people, and like you are sitting in between them, and you will grow with them now. ओके. Yeah. ओके, सो इसमें से कितने लोग जीएलसी टारगेट कर रहे हो? एनी क्वेश्चन यू हैव फ्रॉम हनुमंत? नाउ तो ही इज वर्किंग. यस, कितने लोग जीएलसी टारगेट कर रहे हो? एनी क्वेश्चंस? इन बिटवीन यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन आल्सो, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं. Yeah, if anyone has any questions regarding any subject or like dilemma about the हाँ, study, जीएलसी को नहीं लेके कुछ अच्छा डाउट हो रहा है क्वेश्चन है, यू आपका, कैन आस्क you डायरेक्टली. can bring this up. Yeah, and be free, like because you are going to be a lawyer, so you don't have to like हेजिटेट, you. Yeah, yeah, बी 100% you बिंदास. should speak out, man. ओके, प्राची, जीके सेक्शन का, जीके सेक्शन में क्या चैलेंज आया था? ओके, जीके Yeah, so सेक्शन. for GK section, there like on a monthly basis, I used to read the like notes of like Manoeuvre. I guess like Azad sir used to prepare at that time, so हम्म. I used to read that, and in the like classroom sessions, Azad sir used to come and take one MCQs. So that was very helpful. I will say the notes of Manoeuvre for the GK is enough. That's what I did, nothing else. ओके, प्राची का क्वेश्चन है, व्हाट वाज योर स्ट्रगल विद करंट अफेयर्स? प्राची इज आस्किंग. सुजय इज आस्किंग. Yeah, so like current affair was the like my like most strongest point, I will say, because I used to read newspaper daily, first thing, and the second thing was the manual notes. So these two things cover each and everything. ओके, श्रुति इज आस्किंग Because सर हाउ many a अबाउट. time, हम्म, yeah. गो So अहेड. yeah, I just want to add one more thing on current affairs. Nowadays, a lot many information is available on YouTube. So if you think कि ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, you will end up like losing. So you have to stuck to one resource and make sure that the resource which you are like reading, you hit it 3 times. आज पढ़ा, फिर कल पढ़ो, and then read after 7 days. You're done. If you are like following this now, day one, day two, day seven, you're done. You don't have to read anymore. ओके, श्रुति इज आस्किंग हाउ अबाउट इंग्लिश सेक्शन, हाउ यू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश? English like editorial started. Like I started with editorial on daily basis. So
In the morning, start reading like newspaper, and then for a cab, start with the word power ADZ. These So are the like two things which will improve your So word power Hanuman, ADZ. now you feel like when you were preparing for CET, उस समय जो verbal vocal communication English था और आज वाले में फर्क है? 100%, 100%, sir. There is a difference, and like the difference is something which can be achieved by anyone. All it need is the plan, the schedule which you make of yourself कि या सुबह उठ के मैं एडिटोरियल पढ़ूंगा. You just keep reading. नहीं समझ रहा है, still read it Hmm. daily. अगर आप डेली बेसिस पे उसको कर रहे हो एंड देन यू आर रीडिंग द वर्ड पावर में एडीजी एंड द नोट्स इवन व्हेन एनीवन, that's enough. Like after 6 months, like or 3 months, you will be at the same page. So Hmm. it's not a like very big thing. It's just about being in discipline and in consistency. That's it. Okay. Sheldon D'Souza is asking, hello sir, good evening. My question is, what is the best way for a student to build genuine connection with seniors or lawyers? LinkedIn is there, Yeah, na? yeah. So basically, when you get into like ELC, there is a like a committee named Alumni. So they post each and everything about alumni. They add eras sessions whereby the pass outs come to college, or they have an online session by which like you can easily like connect. Okay. Okay. Yeah. I And hope. also like apart from like GLC, you can also connect to a lawyers like through LinkedIn or something, LinkedIn or like other media platform. Hmm. What is your biggest takeaway or learning from GLC? The takeaway was that you cannot rest. You have to be on toe. Everyone is in the race, and the competition in the Hmm. GLC is such कि you will not able to sit. अरे ये कर Hmm. लेते, ये भी करना है, ये भी करना है. So the crowd will push you to achieve. It's like that. Okay. Okay. If you are in that crowd ना, you will feel कि नहीं यार करना ही है. Hmm. So now you're working Khaitan dot and Co, right? Yeah, So yeah, from how's your experience? What is the culture? Bit idea about it. like Khaitan will like year one law firm. So the culture is like very nice, and eventually I wanted to end up in like tier one, and the working hour are like bit long, but yes, that's what like always wanted. The type of work which we do here, like advising and everything, I'm like really happy. And like I will say that my academics, my hard work match with the opportunity with Ketan, so I'm here. Okay. People are interested to ask, sir, अभी salary package क्या है? You can Google it. ओके. ठीक ठाक मिल जाती है अभी. दाल रोटी चल हाँ जाती सर. है. हाँ सर, हो जाता है सर. सो इज रोजी इट इन रोटी के लिए हो जाता है सर. कुछ नंबर बताना है हमें? कुछ लैक्स में तो नंबर है, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ. पर मंथ लैक्स में तो नंबर है भाई. ठीक है. या. बाकी आपकी कैपेबिलिटी, स्किल, हार्डवर्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Correct, 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 correct. Determination to learn should always be there. If you don't have the eagerness to learn, you cannot thrive in law. Keep learning every day. Keep learning. Vaishnav is asking if you had to prepare for MS Law City again in 2026, especially for GKGS, what are your top three things you would do differently? Top three things. First, newspaper. Second, annual notes. And third, revision. These three things. Okay, I hope Vaishnav you got your answer. Sujay Chauhan is saying, sir, what is the struggle while giving mock where they time based when they are time based? Correct, correct. Yeah. So let's like talk about mock, because when I gave my first mock, my score was 36. I will say 36 was my score when I Okay. gave my first mock. And Okay. then from 35 it went to 45, then 63, then 70, eventually like around 90s. So it was about you study for 10 days, you give a exam. You study for 5 days, you give it. So with time it will improve. You don't have to worry. Like if on the day zero you're getting a score like me, I got 36. So, sir, you can go and check in your track record of anyone. I got 36 in my first. Yeah, I got 36 in my first mock. So with study you have to keep giving mocks after 10 days, in a 15 days or a 5 days. Eventually you will see the score is improving, and like
at that time you will get the motivation. नहीं यार और करता हूँ, हो रहा है, बन रहा है, बात बन रही है. So that's how I like gain confidence also when my score started like improving. Okay, okay. Sujay, I hope you got your answer. Okay. We have Prachiti. What was your revision strategy and the kitne days ke gap mein revise any topics Just now I said na, if you are learning something today, immediately next day you should do like revision, and then after 7 days. after 7 days? That's ठीक है, that after 7 days. That's like it was in my schedule. जो आज पढ़ा हूँ वो कल एक बार रिवीजन करूंगा, and then after 7 days I will pick up the same thing, and then Hmm. it's done. फिर उसके बाद रिवीजन का नीड नहीं होता है. That's what I think. Okay. At your workplace, what excite you more? I mean, most, I mean, I would say. So the work product which we deliver to client, and when they get happy and then they are satisfied, like the attitude which we get from them, that like uh, so I will say ki the gratitude which you get, that like comfort our soul, like ha yeah, being a lawyer, like we are helping, we are advising legally someone, and then they are like praising it, that comforts my soul. And but obvious like the salary which I get. That is the biggest motivation. And what are the challenges you face at workplace? uh Challenges and workplace, like long reading hours, but that's what I like. I will not say a challenge, Hmm. but the amount of the education it require, for Hmm. that one has to be like on to. I like always say, when you're in law, you have to be on to. You cannot be like a back seated driver. You have to always on the like front seat, and jo bhi aa raha hai, pick up books, go to the commentaries, read, draft. You will find n number of errors, and your senior will start reviewing your draft. There will be a lot many changes, and then you will feel ki अरे नहीं यार ये अच्छा नहीं था. But this is the process whereby like everyone has gone through it. Eventually, like with time, people get improve in this thing. So these are the challenges which I am facing, but these are not really a challenge, but a part of being a lawyer. This will happen to everyone, and any of the senior counsel like today has gone through this phase. So everyone has to go through it. So don't take it as a challenge, but as a part of this like field, part of this like profession. Okay. What myth about law as a career you have heard before you had started your CET preparation? है ना, एक जनरल Hmm. मिथ होता है लोगों में. तो was there any kind of this kind of a myth? You So like there was a buzz saying that अगर कांटेक्ट नहीं है, क्लाइंट नहीं मिलेगा तुमको, कौन क्लाइंट देगा. फिर कोर्ट के उसमें बाहर वो बहुत रहा आवाज था. लगानी पड़ेगी नहीं. हाँ हाँ हाँ, नोटरी कर देता हूँ, नोटरी कर देता हूँ. सो इट्स नॉट लाइक दैट. Hmm. Even if people who has good connections in law, at the end the people who are hardworking, who are consistent with their work, will get client. You will eventually land up at a place which will teach you, and eventually you will grow. All those buzz sounds which are like in the society, ignore that. You are a lawyer. Start thinking as a lawyer from the day you started preparing for this exam. You are different from the society now. Hmm. Sujay Chauhan is asking, what was his moreover motivation to get to track again such a struggle after going to bed as patient till 2 GLC, I think. I mean, what he has written. Acha, acha. So I guess he's trying to say ki since you were tested positive, you were Ah, like on bed rest, correct, then you correct. like got up. So I will say, see, from the day one, I'm saying when I like uh, when I started doing Google, which is the best law college, and it was GLC, and that at that time I heard कि भाई यहीं से करना है. And every time in the class like the sir, ये अभी भी आते थे, फोड़ना है यार, फोड़ना है यार. इनका एक वर्ड था, फोड़ते हैं यार, फोड़ना है. वो माइंड में बस था यार, ये तो फोड़ना ही है. सो इवन लाइक आफ्टर कोविड आई सेड कि लाइक आई ऑल्सो लाइक आई लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस कि यार अब होगा या नहीं होगा. बट आई स्टार्टेड विथ माई मॉक टेस्ट. आई एम सेइंग ना, मॉक टेस्ट वेयर the real motivation, because the amount of study you do, the hard work you put in, the result you will get in the mock test. Not like eventually, but with time you will get.
So after like my recovery phase, I started giving the mock, and then I started revising things. Then slowly, I gained my confidence, and then I got. I hope so I mean you got your answer. So those who are targeting for upcoming year 26, 27, अभी इसमें 26 भी लिख रहे हैं तो कुछ लोग 27 भी लिख रहे हैं. What tips you think you want to give to upcoming year aspirant? कि हाँ ऐसा कुछ Yeah, प्रिपरेशन करना चाहिए, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये फ्यूचर प्लान होनी चाहिए, ये रूटीन होना चाहिए या yeah. So those who are preparing for 26, I will say ki your academics, like if you're in your grads, if like if in your 12th, your study equally matters, because without that CET preparation will go in vain. So your schedules would be like in such a way that you manage your academics plus your CET preparation, and make sure that every day you hit all the four subjects. Don't leave a single subject in a day. If you're doing this thing in a discipline and in like consistency, I know like managing academics and CET in a day, it's not easy, but you have to tight up your schedule in such a way कि you should like succeed both, because this is the phase. Once you like overcome from this, after 6 months down the line, when you will get into like XYZ college, you will feel, yeah, it was worth, and you will be really proud of you, and that moment will also like motivate you that you have like managed all things at a time, and like you are here, and then that will be a motivation for you to grow from here. So I will say your schedules will be like very tight, hit all the subjects with academics, BCom, BSc, whatever like you are doing, you should study that also equally, because without that, this will go in vain. ओके नाइस. आई होप थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी दो जो प्रिपेयरिंग विद द कॉलेज या वर्किंग के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तो. So Hanumant, if you had to describe your maneuver experience in one line, what do you say? Sir, I said in between, if I hadn't walked to that Dadar branch, I would have not been here. I guess that will answer. The support, the mentorship which I got from you, Azad sir, and other faculty members, that really made me to achieve things. तो फाइनली मतलब सबसे बड़ा मोटिवेशन नाउ इन लैक्स अभी अच्छी खासी डिजिट में आ रही है सैलरी. बढ़िया है. ओके. That हम्म. या. money, money is like, okay, it is a motivation, but yeah, it doesn't like last long. It will be like ऑब्वियसली. eagerness to learn the law that will bring you here. हम्म. Keep learning, Delhi. Keep learning. ओके. प्रचिति ने फिर से पूछा है कि सर सिलेबस पूरा तो नहीं हुआ है सो फिर भी मॉक दे. सो यू हैड फिनिश योर सिलेबस देन स्टार्ट राइटिंग मॉक No, या. no, 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 no. So basically, you should know at a day zero where you are, and then when you start like learning, and then this is how you will see कि सिलेबस नहीं था, बेसिक नॉलेज से मैंने मॉक दिया तो इतना स्कोर आया. अब मैंने सिलेबस को हिट करना चालू किया, ये पढ़ लिया, पजल कर लिया, जीके कर लिया, अब स्कोर इतना हुआ. सो द एड विल मोटिवेट कि मैं सिलेबस को और हिट करूं. द मोर यू हिट द सिलेबस, आपका स्कोर ग्रेजुअली धीरे 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 ऊपर. यू कैन लाइक टुमारो मॉर्निंग यू कैन गिव द मॉक, बिकॉज आई गेस 30 होते ना मॉक सर, लाइक आई डोंट नो अभी हम्म. एंड पोर्टल में. पूरी पढ़ाई हो जाएगी तब मैं मॉक लिखना चालू करूंगा वो तो दैट इज अ बिग मिस्टेक वन शुड हाँ, डेफिनेटली नॉट डू. दैट इज अ मिस्टेक, बिकॉज फिर मतलब आई विल से स्टार्ट फ्रॉम लाइक आपके पास 30 मॉक है, यू कैन गिव लाइक टुमारो और लाइक टुडे, and हम्म. then say like after 10 days, after like 5 days, after 7 days, you will see there is a improvement in score. You will see this thing, and that will fuel up your like motivation thing. फिर हम्म. आपको किसी के पास जाना नहीं है कि भाई कैसे करूं क्या करूं. That will fuel up, that will be eventually your hard work. श्रुति बंशाली ने क्वेश्चन पूछा है एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर व्हाट वेयर योर स्ट्रगल. I will say the struggle for like first generation and like अगर किसी का godfather है तो भी सेम ही होते हैं at the end, because see, with connections you can get a client, correct, but eventually the product, the output which will go to client, that will be from you. So that will matter. अब अगर किसी का फोर फादर भी है तो मैटर नहीं करता है. It will be your hard work and everything. The thing is कि yeah,
वी विल फाइंड अ डिफिकल्टी इन गेटिंग अ क्लाइंट, बट वो भी हो जाता है, यू विल गेट. Okay. Jayesh Digambar is asking, sir, can we get into the top law firms if not from top college? Yeah, you can get into. So, like, even if you're like not getting into like top 10 like law colleges, all you have to do is ki during the course of your like like academics of law, read case laws daily, read like live law पे जो judgments आते हैं, read articles and everything, and keep interning. If you're interning throughout like 3 year or 2 year, na, eventually you will land up at like good place. So internship will play a like very important role. Okay. And internship के लिए college will help, right? Yeah, college helps. And like nowadays, like you there are various platform People go by out which the like you campus can, also. LinkedIn है, there are like any platform जहाँ से आपको internship मिल जाता है. Okay. हम्म. Okay. So now, I mean, what is the next goal? I mean, future goal क्या है अभी? अभी तो ठीक है. Law college से pass out होकर के now you are in the law firm. What is the future goal? Now I'm an associate, I will become a senior associate in some time, like in some year, then from senior to principal, then eventually becoming a partner at a law firm. That's my Okay. goal. Like, yeah. Nice. Okay. Anyone have any questions? So you do post. सबके डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर है. अभी सिर्फ एक ही काम Hmm. करना है, सीटी प्रिपेयर करना है और परसेंटाइल अच्छा लाना है, स्कोर अच्छा लाना है. नाउ तो दे हैव That's चेंज द correct. स्कोर वाला पार्ट. नाउ दे डोंट रिलीज द स्कोर, नाउ दे रिलीज द परसेंटाइल. Percentile. So that is a new change they come up with. Start thinking like a lawyer and Hmm. बिंदास प्रिपेयर करो. जस्ट द थिंग इज कि आपका जो स्केड्यूल है, जो भी आप लिख रहे हो कि ये करना है, वो करके ही सोना है. दैट्स इट, Hmm. इतना ही करना है, नथिंग एल्स. एंड व्हाट लाइक, सो माय प्लानिंग वाज सच कि मेरे को जो कल करना है मैं रात में लिखता था, एंड आई टू स्टिक इट कि कल मेरे को ये करना है, और रात में ही लिख के सोता था मैं, कि मैं फिर सुबह उठा तो चालू कर दिया. रात में ही वो लिख के सोने कि ये कल करना ही है. करेक्ट है ना. फिर कि नेक्स्ट डे सोचने में क्या नो, करना है वो टाइम खराब नहीं होगा. या सो बेसिकली सी दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना यही एक होता है ट्रिक, कि हार्डवर्क लाइक एवरीवन डज, बट क्या होता है, जो डिसिप्लिन होता है डेली करना है, किसी से एक दिन छूट जाता है, 2 दिन उड़ जाता है. अगर आपका डेली है तो किसी का स्किप हुआ है ना, आप उससे एक स्टेप आगे हो चुके हो. अगर हम्म. आपने एक स्टेप लाइक स्किप कर दिया एक डे, यानी आप पीछे हो गए ऑलरेडी कंपटीशन में. दैट इज द कंपटीशन. ये सिलेबस ये सब नहीं है. देयर आर लाइक अच्छे नोट्स है, सब कुछ है आपके पास में. आपको सिर्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में रहना है. दैट्स इट, कंपटीशन सोचना ही नहीं है. हम्म. मैक्सिमम कितने आवर्स देने चाहिए फॉर सीटी प्रिपरेशन? अगेन श्रुति इज आस्किंग. डिपेंड्स लाइक, इट लाइक डिपेंड्स कि अगर आपका एडिटोरियल अगर 40 मिनट में हो जा रहा है तो आपको इंग्लिश में कम टाइम लगेगा. बट द पीपल हु आर लाइक स्टार्ट कर रहे रीड करना, तो उनको शायद से 2-2 घंटा भी लग सकता है. सो टाइम डजंट मैटर. द थिंग इज की जो आपका सब्जेक्ट है, एडिटोरियल पढ़ना है वर्ड पावर में, डीजी में, लाइक मेरे को भी इस अल्फा लाइक वर्ड्स करना है, तो करना है. अब आप उसको 2 घंटे में करो, हाफ एन आवर में करो, इट्स अप टू यू. एंड लाइक पजल सॉल्व करना है, 5 पजल डेली करना ही है, यू हैव टू डू इट. ऑल दोस थिंग्स, लीगल क्वेश्चन इतने पढ़ने हैं, पढ़ना ही है. उसको 10 घंटा लगा रहे हो तो 10 घंटा लगाओ, 2 घंटा लगा रहे हो तो 2 घंटा लगाओ. द थिंग इज कि जो आपने आज रात में लिखा वो कल करना है. दैट्स इट. स्टार्ट लाइक आई विल से एवरीवन, कल आपका जो भी स्केड्यूल जो भी पढ़ना है, राइट इट डाउन एंड टुमारो जस्ट स्टार्ट हिटिंग इट. एक 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 उड़ाते जाओ. लीगल हो गया, इंग्लिश हो गया, ये हो गया पार्ट ऐसा. ओके. प्रचिति, यू फर्स्ट यू रीड दिस बुक एंड देन वॉच हाँ वीडियो. या, दिस वन या, वर्ड पावर ये पूरी वर्ड खत्म कर पावर. ली थी तूने? यस सर, मेरा पूरा नोट्स है, अच्छा. होल 700 पेज का. क्या पूरा बात है. पूरा बुक खत्म किया था मैंने, पूरा बुक. यही डेडिकेशन ये लोग भी कर ले तो जेल से पहुंच जाए. और इसमें ना सर, लाइक इन दिस बुक लास्ट में ना ए लाइक अल्फाबेटिकली है, तो वो तो और भी हेल्पफुल है. हाँ अगर हाँ, किसी के पास वर्ड कम लिस्ट है, टाइम है वर्ड ना, लिस्ट है. वर्ड लिस्ट करेक्ट करेक्ट, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट. लास्ट में वो हम्म. अर्लिस्ट है, उससे स्टार्ट कर दो. हम्म. उसको डेली कर लो, हो गया. वकैब खत्म हो गया आपका. इंग्लिश में तो इजीली स्कोर हो जाएगा फिर. अगर हम्म. एडिटोरियल और ये हो रहा है तो यूर डन. हम्म. अभी तो और पजल आना बाकी तो कम हो गए. ड्यूरिंग योर हाँ, टाइम दे वर आस्किंग डिसेंट लेवल ऑफ पजल अरेंजमेंट, नाउ दे डोंट आस्क अरे मच.
पजल्स तो एट दैट टाइम सर काफी आते थे, वो सीटिंग अरेंजमेंट, मतलब ब्लड आईबीपीएस था रिलेशन ना उस एंड समय, ऑल। आईबीपीएस पेपर बना रहा था अभी। हाँ। आईबीपीएस हटा दिया है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल डाउन हो गई है। ओह अच्छा, इज इट? फिर भी तो लाइक कंपटीशन बड़ा है। ब्लड रिलेशन, सिलॉक्स, ये तो सब मेरे हम्म। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है लाइक रीजनिंग में। आई कैन लाइक इजीली, इतना ज्यादा प्रैक्टिस हो गया था इसका कि आई यूज्ड टू लाइक इजीली स्कोर इन दिस थिंग, ब्लड रिलेशन, सिलॉक्स, पजल, बिकॉज राजवर्धन these are देशमुख asking if starting from November can we get GLC? 100%, 100% इजीली मिल जाएगा, इजीली। आई गेस देर आर, अगर 90 डेज है ना, 90 डेज इज इनफ टू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हम्म। 90 डेज। तो जितने भी यूट्यूब फैमिली मेंबर है और क्लासरूम स्टूडेंट है मेनूवर के लाइव सबको ये क्या एडवाइस दोगे, फाइनल एडवाइस? Final advice like to law students, like see, for the aspirants I will say, start like thinking like a lawyer, be in discipline and be consistent, this of a, and like for overall thing if I say कि अगर आपको कहीं पे कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, मोटिवेशन का है नीड, सो यू जस्ट हैव टू स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग योरसेल्फ। आपको कहीं बाहर जाने का जरूरत नहीं है। इफ यू आर लाइक फाइंडिंग डिफिकल्टी, मेरे से इंग्लिश नहीं हो रहा है, मेरे से रीजनिंग नहीं हो रहा है, you reach out to the faculty of anyone, they will help you out। like I remember initially like reasoning was a challenge, फिर वो आजाद सर ने हेल्प किया। so you are at a right place। कुछ भी होता है, यू लाइक रीच आउट टू द लाइक मेंटर्स काफी अच्छे हैं इधर आपके पास में। आपके पास सिलेबस मिल जाएगा, मॉक मिल जाएगा, यू विल गेट एवरीथिंग। सो जस्ट आपको करना है, दैट्स इट। ओके, सो आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड द पॉडकास्ट। और कुछ क्वेश्चन है तो फटाफट पूछ लो, अदरवाइज मुझे भी घर जाना है, हनुमान को भी खाना खाना है। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडेस पॉडकास्ट। आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड द पॉडकास्ट, सारे आंसर आपको मिल गए होंगे। ठीक है, सो वर्ड पावर मेड इजी इज इनफ फॉर वोकैब 100% श्रुति, या ऑब्वियसली। 100%, उससे ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है, उतना हम्म। कर लो वही बहुत है भाई। इफ यू हैव डन दिस, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। वो कैप पूरा कवर होता है, एवरीथिंग, इट हैज एवरीथिंग। I am ओके। saying that, see, so sorry, sir. So basically, we are in a digital era, and digital era में क्या हो रहा है कि इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा अवेलेबल है ना कि लोग सब, अरे ये भी पढ़ता हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी देख लेता हूँ यूट्यूब पे, ये भी नहीं। यू हैव टू जस्ट फोकस, एक चीज पे फोकस करो, उसको 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, दैट्स इट। हम्म। हनुमंत, यू आर वर्किंग नाउ, सो जितने भी लोग अभी अब फ्यूचर लॉयर बनेंगे, व्हाट यू थिंक फ्यूचर ऑफ लॉ इंडस्ट्री क्या होने वाला है? सो Looking at AI is coming to the हाँ picture. हाँ, या So how much help you सो people are taking? बेसिकली इफ यू विल सी, देयर आर मेनी लॉ फर्म्स एंड लाइक लॉ इंस्टीट्यूट जिन्होंने एआई को अडॉप्ट किया है। सो नाउ द एज अ अडेज लाइक आवर की जो 1 घंटा था, अब वो 40 मिनट हो गया है, यानी जो काम आपका लाइक 1 घंटे में हो रहा था, अब वो 40 मिनट में हो रहा है। सो इट्स लाइक लॉयर्स आर ऑल्सो यूजिंग द एआई इन सच अ वे कि उनका जो प्रोडक्टिविटी है बूस्ट हो रहा है। एंड एवरी लॉ फर्म एंड एवरी इंस्टीट्यूट लाइक ऑफ लॉ इज encouraging to use the like AI, because no one want to become like Nokia। नोकिया किसी को नहीं बनना है। विद टेक्नोलॉजी यू हैव टू मूव। सो अगर एआई आ रहा है, इफ यू गाइस आर थिंकिंग कि जॉब आगे नहीं रहेगा, ये सब मिथ है, ऑल दिस आर मिथ। बिकॉज एआई के देयर विल, अभी जैसे एआई आया तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ हो गया एंड ऑल दोस थिंग्स एरियाज विल बी लाइक वेरी हेल्पफुल। सो ये सोचना ही नहीं कि एआई की वजह से जॉब चली जाएगी, दिस विल जस्ट हेल्प यू आउट। एंड फ्यूचर में लॉ इंडस्ट्री में जो करियर स्कोप अभी अवेलेबल है, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट अदर करियर स्कोप माइट इमर्ज? विथ लॉ, Yep. Is academics, in-house, legal advisor, like there are like many opportunities in law। consultancy भी is there, no? Consultancy also like one can do। Because of AI consultancy डाउन पे नहीं है? नो सर, सो बेसिकली डजंट मैटर कि आपने किया, मतलब सर जिसका भी अगर कोई केस होता है वो गूगल करेगा, अच्छा अच्छा ये है, बट टू डू दैट प्रोसेस यू विल नीड अ लॉयर, यू विल नीड समवन हु कैन लाइक फॉर एग्जीक्यूशन। सामने सामने बैठ के आपको समझा सके। ओके। ऐसा है, नो वन इज गोइंग टू द एआई, मतलब जो लाइक एआई ने बोला ऐसा करना है, एवरीवन विल नीड अ लॉयर टू गेट देयर वर्क डन। और इंडिया में तो यार मतलब बेसिक ऑफ लॉ भी बहुत ही रेयर पता होता है, बहुत ही कम पता है लोगों को।
सो वहां पे हम्म। एक एज है, नो डाउट अबाउट इट। और आप लॉयर बनोगे तो मतलब एक होता है कि रिस्पेक्ट सोसाइटी में, वो होती है कि नहीं? हैव यू गॉट दैट वो- रिस्पेक्ट व्हेन यू गेट इनटू जीएलसी पास आउट? आई मीन वो रिस्पेक्ट मिलती है कि नहीं? हाँ मिलता है सर। इज्जत नहीं, अभी तो इज्जतें मिलती रहेगी नहीं? हाँ यार, लाइक आफ्टर गेटिंग हियर मिलता है सर, काफी मिलता है, बट ठीक है। लाइक एवरीवन कैन गेट दिस थिंग, ये तो मतलब आई कैन से दिस थिंग। जस्ट यार यू हैव टू जस्ट थॉरो विथ योरसेल्फ, लाइक जो चाहिए वो चाहिए, बस इतना है। सो देव सर का लाइन है ना, फोड़ना है, बस फोड़ना है, खत्म। कुछ सोचना ही अचीवेबल नहीं उसके आइडिया। आजू बाजू। हाँ यार। All right, guys. So let's stop the session. I hope people have enjoyed the session. And हनुमान को सब लोग थैंक यू बोल दो भाई, काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन हमें मिली है फटाफट। अरे ओके, नो। सब लोग थैंक यू बोल रहे हैं। ओके, और यू कैन कनेक्ट विथ हनुमंत ऑल्सो ऑन लिंक्डइन। ओके, सो या ही इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू पीपल। और या जीएलसी जाएंगे सही, हाँ जीएलसी जाएंगे पक्का। स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, टुमारो मॉर्निंग से चालू कर दो। अभी थैंक यू जाके सो मच। स्केड्यूल लिखो, गो एंड राइट द स्केड्यूल फॉर टुमारो। ओके, या ओके फाइन जयस। ओके, ओके ओके, वेलकम प्रचिति, शेल्डन, दिशा। ठीक है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग वेरी वेल। वी स्टिल हैव डिसेंट टाइम इन आवर हैंड। 120 में से 100 प्लस का स्कोर वी नीड टू हिट टू गेट द 99 प्लस परसेंटाइल। 99 प्लस परसेंटाइल इफ यू आर हिटिंग, श्योरली जीएलसी आईएलएस एंड टॉप 5 में यू विल गेट इनटू। और प्रिपरेशन कर रहे तो मतलब अच्छा कॉलेज से ही लॉ करना, ये माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन करो। ठीक है, बाय गाइस, बाय बाय all the बाय। best for exams, all the best for your exams and like your थैंक यू preparation. फॉर हनुमंत यार, गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। और No problem sir. बच्चों को भी सारी गाइडेंस मिल गई। तो Anytime sir, anytime, anytime, like if student needs me I will be there. एंड यस्टरडे आई वाज एट दादर सेंटर, योर आई मीन ही इज योर ब्रदर क्या? सेम दिखता है यार वो तो। मतलब व्हेन आई सॉ हिम आई आस्क्ड हिम, मैंने कहीं देखा है तुझे? तो ही सेड सर मैं हनुमान का भाई हूँ। देन आई रियलाइज, हाँ ओके सेम फेस है। आर यू ट्विंस और व्हाट? No sir, like अच्छा, वो भी एकदम डेडिकेशन के साथ लगा है, वो भी फोड़ेगा जेएलसी। let's see. चलो ओके, So yeah, चलो गुड नाइट, टेक केयर एंड yeah, good night. ऑल द बेस्ट एवरीवन। All ठीक the है, best everyone. चलो हनुमंतिया, बाय बाय, टेक Bye. केयर, बाय बाय।